Hare Krishna. Welcome to our ISKCON Punjabi Bhag YouTube channel. The purpose of ISKCON Punjabi YouTube channel is to bring in front of you daily the beautiful darshan of the Lord. Melodious kirtans, Daily discourses, daily guidance, upcoming new festivals, and much more. So therefore, please stay connected with us. For that, you have to click the subscribe button And press bell icon. Thank you. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 9, The Dynasty of Amshuman. आज हम श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद 9वें अध्याय से पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अंशुमान की वंशावली. Text 16 and 15, 16, 17. श्लोक संख्या 15, 16 और 17. Shuto Bhagiratha Jajne Tasya Nama Parobhavat Sindhu Dvipastatastasmat Ayutayustato Bhava Rituparna Nalasakha Yosvavidyam Ayannalat Dattavaksha Hridayam Chasmai Sarvakamastu Tatsutam. Please chant. Shuto Bhagiratha Jagge Bhagiratha Jajne Namo Paro Bhavat Sindhu Dvipastatastasmat Tasmat Ayu Yastato Bhavat Yastato Bhavat Parno Nalasakho Sako Vashvidyamayana Vaksha Hridayam Chasmai Sarvakamastu Tatsutam Tatsutam Bhavat Nudvipastatastasmat Astatavat Alesaka Kamastatasutam Bhagirathaya Abhavavat Sindhu Dvipastatastasmat Ayustatavavat Bhagavatam Sutam. You can read translation. All three ones. The word by word also. Yes. शब्दार्थ धन्यवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की श्रुता श्रुत नामक पुत्र भगीरथ से यज्ञ उत्पन्न हुआ तस्य नाभ नामक अपरा अन्य पूर्ण वर्णित नाम से भिन्न अभवत उत्पन्न हुआ सिंधु द्वीप नाम से नाम से तस्मात् सिंधु द्वीप से अयुतायु नामक पुत्र तत्पश्चात अभवत पैदा हुआ ऋतुपर्ण नामक पुत्र नल सखा नल का मित्र या जो अश्विद्या घोड़ों को वश में करने की कला आयात अर्जित की
नलात नल से, दत्वा बदले में देकर, अक्ष हृदयम द्यूत क्रीड़ा का रहस्य, च तथा अस्मय नल को सर्वकाम नामक तू निसंदेह तत्सुतम उसका पुत्र। अनुवाद: भगीरथ का पुत्र शुद्ध था और शुद्ध का पुत्र नाभ था। ये नाभ पूर्व वर्णित नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, जिसका पुत्र अयुतायु था, और अयुतायु का पुत्र ऋतुपूर्ण हुआ, जो नल राजा का मित्र बन गया। ऋतुपूर्ण ने नल राजा को द्रुत क्रीड़ा सिखलाई और बदले में उसने नल राजा से घोड़ों को वश में करना तथा उनकी देखरेख करना सीखा। ऋतुपूर्ण का पुत्र सर्वकाम था। तात्पर्य: जुआ खेलना भी एक कला है। क्षत्रियों को द्युत क्रीड़ा की कला में अपनी प्रतिभा दिखलाने की छूट है। कृष्ण की कृपा से पांडवों ने जुए में अपना सर्वस्व गवा दिया और वे अपने राज्य, पत्नी, परिवार तथा घर सबसे वंचित हो गए, क्योंकि वे द्युत कला में पटु ना थे। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलापों में दक्ष ना हो सकता हो। अतएव शास्त्रों का उपदेश है कि जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए, संसारी कार्यकलाप अनुकूल नहीं होते। अतएव भक्त को भगवान द्वारा भेजे गए प्रसाद को खाकर ही संतुष्ट होना चाहिए। भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह द्रुत क्रीड़ा, नशा, मांसाहार तथा अवैध यौन जैसे पापपूर्ण कृत्य नहीं करता। And 15. श्लोक संख्या 15 का अनुवाद: मुनिगण भौतिक काम वासनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अपना ध्यान पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भव बंधन से छूट जाते हैं और वे भगवान का आध्यात्मिक गुण प्राप्त करके दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की यही महिमा है। Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. How many of you was coming for the Bhagavatam class for the last 5 days from? आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो पिछले 5 दिनों से भागवतम कक्षा में आ रहे हैं लगातार? Who remembers the story that we are reading about? किनको इस कथा का संदर्भ पता है? This describes the story how Ganga descended to the earth. ये कथा बताती है कि किस प्रकार से गंगा का अनुगमन हुआ पृथ्वी पर। And there was a dialogue between Ganga and King Bhagirath. और गंगा और भगीरथ में वार्तालाप हुआ। And Ganga asked Bhagirath one question. Who remembers the questions that Ganga asked Bhagirath? तो गंगा जी ने भगीरथ से प्रश्न पूछा। तो आप में से किसको पता है वो प्रश्न कौन सा था? Who can say? कौन बता सकता है? Who will be able to control my force and how will I get rid of sinful reactions? Yes, very nice. बिल्कुल सही उत्तर है।
Yes, the most important question was for her how she can get rid of the sins. तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनके अपने लिए था कि किस प्रकार से वो जो पापमय फल है उससे मुक्त हो पाएंगी. Because in this age of Kali, so many sinful people are coming on the banks of the Ganga. तो कलयुग में विशेषकर इतने सारे पापी जीव आते हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए. And they are leaving all their sins. और अपने सारे के सारे पाप वहाँ छोड़कर चले जाते हैं. So she was afraid what will happen to her. तो बहुत भयभीत थी कि उनके साथ क्या होगा. And what was the answer of King Bhagirath? और भगीरथ महाराज का क्या उत्तर था? Who remember? किसको याद है? Yes. Okay. So when devotees will take baths in her, so that's how they will. Yeah, special devotees. Completely pure devotees, when they are taking baths in the Ganga, they are neutralizing all the sins. तो जब पूर्ण शुद्ध वैष्णव वहाँ पर स्नान करेंगे, तो उनके जितने पापमय फल वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको समाप्त कर देंगे. Very rare souls. तो ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं. And the verse 15 is describing such devotees. और जो 15वां श्लोक है, वो ऐसे भक्तों को वर्णित उनके बारे में बता रहा है. They are already liberated. कि वो पहले से ही मुक्त हैं. Srila Rupa Goswami is calling them Jivan Mukta. श्रील रूप गोस्वामी उन्हें जीवन मुक्त कह के संबोधित करते हैं. Who remember this definition given by Rupa Goswami? Who is Jivan Mukta? तो श्रील रूप गोस्वामी जो बताते हैं जीवन मुक्त, तो उनकी परिभाषा क्या है? Who can say? कौन कह सकते हैं? Yes. Yes, what is definition of one who is liberated? प्रभु ने कहा कि जो इस भौतिक देह में ही मुक्त रहकर भी मुक्त होता है. हमारे पूछ रहे हैं वो ठीक है, उसको किसको मुक्त कहा जाएगा? Who remembers the verse? Yes. Yes, very nice. बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रभु जी ने. कहा कि जो अपने मन, अपने वाणी, मन और अपने शरीर से निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो इस देह में, भौतिक देह में रहते हुए भी मुक्त है. Yes, one has to dedicate completely everything to the service of the Lord. तो अपने आप को पूर्ण समर्पित करके भगवान की सेवा में, then he is already liberated. तो वो मुक्त है. Like when Srila Prabhupada was staying in Radha Damodar temple, जब श्रीला प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, there was one lady, she was bringing every morning one bucket of water from Yamuna. तो वहाँ पे एक महिला थी, तो जो सुबह यमुना से एक बाल्टी पानी भरकर लाती थी वहाँ विग्रह की सेवा के लिए. And then she left the body, went back to Godhead. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि वो वापस भगवत धाम जाएंगे. So it's not so difficult. भगवत धाम जाना इतना मुश्किल नहीं है. That was everything she was able to do. She was bringing one bucket of water from Yamuna every day for Radha Damodar. तो उस आयु में इतना ही कर पाती थी कि रोज सुबह यमुना से जाकर बाल्टी में पानी भरकर मंदिर लाती थी विग्रहों की सेवा के लिए. And Radha Damodar was completely satisfied with her. और राधा दामोदर पूर्ण संतुष्ट थे उनके सेवा भाव को देखकर. So they took her back to Godhead. उनको वो वापस भगवत धाम उन्होंने बुला लिया. So the process of Bhakti Yoga is very simple. तो भक्ति योग का जो विधि है बहुत सरल है. You don't have to do
austerities like yogis in Himalayas. आपको उस प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है जैसे योगी हिमालय में करते हैं। They are doing very extreme austerities. तो बहुत कठोर तपस्याएं करते हैं। They are standing in the water of Ganga when the water is -1 degree. तो वो गंगा में जब उसका तापमान -1 होता है ऐसे जल में खड़े होते हैं। And they are standing for many hours inside the water. कई घंटे ऐसे ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं। Who can do such austerity? आप में से कौन कर सकता है ऐसी तपस्या? Nobody. शायद कोई भी नहीं। It's very difficult. बहुत मुश्किल है। But for us, Srila Prabhupada gave very simple austerities. परंतु हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तपस्याएं दी। We have to chant 16 rounds every day. 16 माला का जप करना है प्रतिदिन। We have to follow the 4 regulative principles. तो जो 4 नियम हैं उनका पालन करना है। And we have to do some service. और कुछ सेवा करनी। Not so much. तो इतना कठिन नहीं है। Very easy process. बहुत सरल विधि है। Many times Srila Prabhupada was saying that Lord Chaitanya gave us very simple process. बहुत बार श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सरल विधि दी है। Chant, dance and take prasadam. कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। So Bhakti Yoga is bringing only happiness. तो जो भक्ति योगा है वो हृदय को आनंद प्रदान करने वाले विधि है। But yogis, they are following process which are bringing so much suffering. तो योगी जन ऐसा विधि का पालन कर रहे हैं जिसमें इतनी पीड़ा सम्मिलित है। And Lord Krishna is saying about this in Bhagavad-gita. He is saying that these yogis, they are performing austerities, they are doing so much penance and suffering. और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ऐसे योगियों के बारे में जो इतनी कठोर तपस्याएं कर रहे हैं, इतनी पीड़ा उठाकर। But Bhakti Yoga is bringing only happiness. परंतु जो भक्ति योग है उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद है। So if we have some suffering, that means that we are not completely doing Bhakti Yoga. तो अगर हमें अपने जीवन में कुछ पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हम भक्ति योग को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। So we have to do some analysis what we are missing in our process. तो हमें कुछ निरीक्षण करना चाहिए कि अपने इस विधि में मैं क्या चीज अभी नहीं कर रहा। And we have to completely dedicate ourselves to Bhakti Yoga. और अपने आप को पूर्ण समर्पित करना भक्ति योग की विधि में। Srila Prabhupada is saying that devotees, he is not supposed to be expert in materialistic activities. श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त भौतिकवादी कार्यकलापों में दक्ष ना हो सकता हो। And many times when you are asking devotee to do some material activity, it's very difficult for them. और बहुत बार जब हम भक्तों को कोई भौतिक कार्यकलापों में लगाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। But when they are doing devotional service, they are becoming expert also. परंतु जब वो भक्ति में विधि में लगे हैं तो वो दक्ष भी हैं, दक्ष बन जाते हैं। Some devotees, they becoming very expert artists. जैसे कुछ भक्त बहुत ही दक्ष आर्टिस्ट बन जाते हैं। And they are doing very nice paintings for the different temples. और वो अलग-अलग मंदिरों के लिए बहुत सुंदर-सुंदर चित्र बनाते हैं। Some devotees, they are growing very nice vegetables for the Lord. और भक्त जो भगवान के लिए अलग-अलग सब्जियां उगाते हैं। They are growing rice. चावल उगाते हैं। Because nowadays materialists, they are improving their technologies, and now in China they are making rice from the plastic. तो आज के समय जो भौतिकवादी हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर ली है कि चाइना में जो चावल है वो प्लास्टिक से बना रहे हैं। So if you are buying rice from the market, you may be buying some plastic. तो अगर आप मार्केट से अभी चावल खरीद रहे हैं तो हो सकता है वो कुछ प्लास्टिक हो। If it is made in China.
अगर वो मेड इन चाइना है And you will not be able to check is it plastic or is it rice. It's completely same. और देख के आप ये अंतर नहीं बता सकते कि कौन सा असली है और कौन सा नकली. But if you put this plastic rice into the fire, it's melting like plastic. परंतु अगर तो आप अग्नि में डालेंगे जो प्लास्टिक वाला राइस है, जैसे प्लास्टिक पिघलता है वो वैसे ही पिघलते हैं. So it's only way how you can check is it real rice or it's plastic. तो ये एकमात्र विधि है कि आप इसको निरीक्षण कर सकें कौन सा असली है कौन सा. And they are producing hundreds of tons of this plastic rice. और वो हजारों टन ऐसा प्लास्टिक चावल उत्पाद. And they are supplying it all around the world. और पूरे विश्व में उसको सप्लाई कर रहे हैं. So it's becoming important to grow our own rice even. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हम अपना चावल खुद उगाएं. Because you have to offer it to the deities. क्योंकि हमें आज विग्रहों को अर्पित करना है, भोग लगाना है. They will not accept plastic. तो प्लास्टिक राइस को स्वीकार नहीं करेंगे. So some devotees are becoming expert to produce some real food. तो इसलिए भक्त अब दक्ष बन रहे हैं धीरे-धीरे असली भोजन को उगाने के लिए. Because when you are buying milk from the market, you will not be sure that it is milk. तो जब आप मार्केट से दूध खरीदते हैं तो आप निश्चित नहीं हो सकते कि मैं दूध ही खरीद रहा हूँ. Because materialists are very expert, they can just do some chemical reaction and it will be same as milk. तो क्योंकि तथाकथित भौतिकवादी दक्ष लोग इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं दूध के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं. So many devotees now they are keeping the cows to have real milk. इसलिए बहुत सारे भक्त गायें रखते हैं कि जिससे उनको असली दूध प्राप्त हो सके. And Srila Prabhupada, he wanted from the devotees to produce real food for the deities. और श्रीला प्रभुपाद भक्तों से यही अपेक्षा रखते थे कि वो असली भोजन की उत्पत्ति करें अर्च विग्रहों के लिए. Otherwise we are offering to the deities and we don't know what we are offering. इसलिए हम अर्च विग्रहों को कुछ भोग लगा रहे हैं और हमें पता नहीं होगा कि हम क्या भोग लगा रहे हैं. But most important, what Srila Prabhupada wanted for us, that we would preach. परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो श्रीला प्रभुपाद हमसे चाहते थे कि हम प्रचार करें. Because there are many people, they are producing some food. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ उत्पत्ति कर रहे हैं. There are many artists, they can do paintings. और ऐसे भी बहुत आर्टिस्ट हैं जो बहुत सुंदर पेंटिंग बना सकते हैं. But non-devotees, they cannot preach. Non-devotees, they cannot preach. परंतु भक्त की तरह प्रचार नहीं कर सकते. Only devotees, they can preach. सिर्फ भक्त ही प्रचार कर सकता है. That's why Srila Prabhupada was giving so much stress. Distribute books, distribute books, distribute इसलिए books. श्रीला प्रभुपाद इतना अधिक बल देते थे कि पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए. And Srila Bhaktivedanta Saraswati was saying that only one who has life, he can preach. और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जो जीवित है सिर्फ वही प्रचार कर सकता है जिसके पास जीवन है. So if we don't have life, how we can preach? तो अगर हम खुद आध्यात्मिक जीवन में जीवित नहीं हैं तो हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? And real life is bhakti yoga. असली जीवन भक्ति योग है. Without bhakti yoga, we don't have life. बिना भक्ति योग के हमारे पास जीवन नहीं है. So we have to be very serious in our practice. तो इसलिए अपने अभ्यास पे बहुत गंभीर होना चाहिए. We have to come to the temple. नियमित रूप से मंदिर आए. For Aratik, for Bhagavatam class. आरती के लिए, भागवतम कक्षा के लिए. Nashta prayeshva badrishu nityam bhagavata seva bhagavati uttama bhaktir bhavati naishtiki. It is said in the first canto that only by hearing Srimad Bhagavatam we can become purified. श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में लिखा है कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से ही हम शुद्ध बन सकते हैं. Abhadra means dirt. अभद्रम जिसका अर्थ है जितना मलिनता है
And by hearing Srimad Bhagavatam, we can become completely purified. और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, उसको स्वीकार करके हम इस अभद्रता मलिन चीजों से पूर्ण शुद्ध हो सकते हैं. And it is said in this verse that after we will become purified, our heart will be filled with bhakti. और इस श्लोक में बताया है कि जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति से भर जाता है. And we can practice bhakti yoga on the another level when we are becoming purified. जब हम शुद्ध होते हैं, तो भक्ति योग हम एक अलग स्तर पर उसका अभ्यास करेंगे. When our heart is filled with different dirt, it's very difficult to practice bhakti yoga. जब हमारे हृदय में ऐसे मलिन चीजें भरी होती हैं, तो भक्ति योग का पालन करने में बहुत कठिनाई होती है. It is called anishtita bhakti. उसको कहते हैं अनिष्ठिता भक्ति. So it's not stable. तो वो स्टेबल नहीं रहती. Sometimes we have enthusiasm and with great enthusiasm we are chanting japa. Another day we don't have any enthusiasm. कभी कभार हमें बहुत उत्साह होगा जप करने के लिए, और अन्य दिनों पर नहीं होगा. It's very difficult to chant. तो बहुत मुश्किल लगेगा जप करना. So that's why it's very important to come for Bhagavatam class every day. इसलिए इतना महत्वपूर्ण है भागवतम कक्षा के लिए आना. And Srila Sanatana Goswami, he collected glorification of Srimad Bhagavatam from different Puranas in Hari Bhakti Vilas. श्रीला सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में अलग अलग पुराणों से श्रीमद् भागवतम की महिमा को इकट्ठा किया. In these verses it is said that if someone has Srimad Bhagavatam in his home, एक श्लोक में इस प्रकार बताया गया है कि अगर किसी के पास श्रीमद् भागवतम घर पर है, Lord Hari and all demigods are coming to his home, they are present in his home. तो भगवान हरि और सारे देवी देवताएं उस घर में उपस्थित हैं. In the next verse it is said if someone has Srimad Bhagavatam in his home, all holy places, all holy rivers or holy lakes are present in his home. और अगले श्लोक में बताया गया है कि अगर किसी के पास श्रीमद् भागवतम घर पर है, तो सारे के सारे तीर्थ स्थान, सारे के सारे तीर्थ नदियां और सारे के सारे तीर्थ कुंड वहां पर उपस्थित हैं उस स्थान पर. There are many verses, maybe 20 verses glorifying Srimad Bhagavatam. तो लगभग ऐसे 20 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं. And then Sanatana Goswami is saying about those who don't have Srimad Bhagavatam in their home. उसके बाद वो वर्णन करते हैं ऐसे लोग के बारे में जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है. How many of you don't have Srimad Bhagavatam in your home? आप में से कितने हैं यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके पास श्रीमद् भागवतम घर पे नहीं है? It's a very dangerous situation. बहुत खतरनाक स्थिति है. Sanatana Goswami is quoting the verse. It is said that one will not be able to come back from the abode of Yamaraj. He will never be able to come back if he does not have Srimad Bhagavatam in his home. श्रीला सनातन गोस्वामी श्लोक उदित करते हुए कहते हैं कि जिनके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो यमराज का जो स्थान है वहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा. So it's very dangerous to not have Srimad Bhagavatam. बहुत खतरनाक है भागवतम दान होना. You should be very eager to get Srimad Bhagavatam. बहुत उत्साहित होना चाहिए श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करने के लिए. And he is quoting one more verse. It is said that if one have half of the shloka from Srimad Bhagavatam in his home, एक अन्य श्लोक में कहते हैं कि किसी के पास भागवतम का सिर्फ आधा श्लोक ही हो घर पर, or if he even have 1/4 of shloka in his home, एक चौथाई श्लोक भी हो घर पर, he does not need any other books in his home. तो उसको अन्य किसी भी पुस्तक या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है घर पर. So powerful is shlokas from Srimad Bhagavatam. तो इतने शक्तिशाली है श्रीमद् भागवतम के श्लोक. One shloka from Srimad Bhagavatam is more heavy than all other books in the world.
एक चौथाई श्लोक श्रीमद् भागवतम का सारे के सारे ग्रंथों को मिलाकर उस पर भारी पड़ता है. So powerful is this Bhagavatam. तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भागवतम कितना शक्तिशाली है. That's why Srila Prabhupada gave so much importance that we are reading Srimad Bhagavatam every day. इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना महत्वता देते थे, इसलिए प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं. So if we are coming every भागवतम का यहाँ पर कक्षा में, तो आप पूर्ण शुद्ध बन जाएंगे. If we don't have this opportunity, at least we have to read Srimad Bhagavatam at our home. अगर हमारे पास ऐसा अवसर नहीं है कि हम प्रतिदिन कक्षा में आ सके, तो घर पर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़िए. Srimad Bhagavatam is literary incarnation of Krishna. श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का ग्रंथ अवतार है. So it's not different from Krishna. ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है. If we don't have deities at home, we can offer all our worship to Srimad Bhagavatam. अगर हमारे घर पर अष्ट विग्रह नहीं है, तो हम सारी की सारी पूजा हम श्रीमद् भागवतम को अर्पित कर सकते हैं. We can offer incense, we can offer fire, we can offer flowers, we can offer our food to Srimad Bhagavatam. तो अगरबत्ती, दीप, पुष्प, ये सब हम आरती कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम की, और श्रीमद् भागवतम का भोग भी लगा सकते हैं. And it is said in the 12th canto of Srimad Bhagavatam that there is a special day to give Srimad Bhagavatam as a gift. तो श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद में बताया गया है कि एक विशेष दिन है जिस समय हमें श्रीमद् भागवतम का दान में देना चाहिए. It's Bhadra Purnima. भाद्र पूर्णिमा के दिन. Purnima of the month of Bhadra. जो भाद्र मास की पूर्णिमा को. Special day, it's called Vishwarup Mahotsav. उसको विश्वरूप महोत्सव भी कहते हैं. Srila Prabhupada took sannyas on this day. श्रील प्रभुपाद ने उस दिन संन्यास स्वीकार किया था. And in the 12th canto, 12th chapter, verse 13, it is said तो 12वें स्कंद का 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है that if one will put Srimad Bhagavatam on the golden throne on this day and give as a gift to somebody, he is becoming liberated completely from this material world and will enter the eternal abode of Krishna. बताया गया कि ऐसे दिन अगर कोई श्रीमद् भागवतम को दान में देता है तो वो मुक्त हो जाएगा और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करेगा. The one who is given gift and the one who is receiving this gift on this day, he is getting this so much blessings. तो जो कोई इस दिन श्रीमद् भागवतम का दान करता है और जो इस दिन स्वीकार करता है, दोनों को इतना असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है. So on this day in Russia we are distributing Srimad Bhagavatam in huge quantities. तो विशेषकर इस दिन हम रशिया में श्रीमद् भागवतम का प्रचुर मात्रा में वितरण करते हैं. We are distributing Srimad Bhagavatam every day, but especially on this day we are distributing. तो हम श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन वितरित करते हैं, परंतु विशेषकर इस दिन हम बहुत अधिक संख्या में श्रीमद् भागवतम वितरित करते हैं. Because we want people to get all these blessings. क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को ये सारा आशीर्वाद प्राप्त हो. So if you wish to that some of your friends, relatives would get big benefits, you can give them Srimad Bhagavatam, especially on this day, but on any other day also. तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को असली में लाभान्वित करें, तो आप उन्हें श्रीमद् भागवतम दीजिए. किसी भी दिन, चाहे इस दिन, विशेषकर उस दिन, और साल के किसी भी दिन. So it is the best gift for any ceremony, for birthday, for marriage, for any other day. If you will give Srimad Bhagavatam as a gift, they will receive so much benefit. तो किसी भी अवसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा उपहार है, चाहे किसी का जन्मदिन हो या किसी का विवाह समारोह हो. This book is so important. ये जो ग्रंथ है इतना महत्वपूर्ण है. So if you have any questions or doubts, तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो yes. Thank you, Maharaj. And I wanted to ask any experience, any
enriching experience that you have had over so many years by distributing Srimad Bhagavatam or Bhagavad-gita. So you can share with highly reflection. For this marathon, I was distributing books in South Russia. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज आप इतने सालों से ग्रंथ वितरण कर रहे हैं कि अगर आप उसका कोई अनुभव बता सके श्रीमद् भागवतम को वितरित करने का। Usually I'm going from office to office. तो महाराज कह रहे हैं इस मैराथन में साउथ रशिया में पुस्तक वितरण कर रहा था, ऑफिस से ऑफिस जा रहा था। I'm approaching the bosses of different small factories. तो वहाँ पे छोटी-छोटी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ के जो मालिक हैं उनको मैं मिलने जाता था। Bosses of shops. तो जितने दुकानें हैं उनके दुकानदारों को। And many of them, they are quite pious people. They like to buy some books. और उनमें से बहुत सारे पायस लोग हैं, उनको पुस्तक लेना अच्छा लगता है। They are happy to give some donation. और वो बहुत खुश हैं कोई डोनेशन देने के लिए। There was one boss. He was very busy. वहाँ पे एक बॉस था जो बहुत व्यस्त था। And we made appointment that I will meet him after 4 hours. तो हमने अपॉइंटमेंट ली कि हम 4 घंटे बाद मिलेंगे। And he was very happy to meet devotees. और बहुत खुश था भक्तों से मिलकर। He looked through the books. उन्होंने पुस्तकें देखी। He gave very nice donation. It's 10,000 rupees. तो उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया 10,000 रुपए। And he bought a set of books. और एक पुस्तकों का सेट खरीदा। And there are many people like this. They like to read. और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। And they never heard about Krishna. जिन्होंने कभी कृष्ण के बारे में नहीं सुना। They never heard about devotees. उन्होंने कभी भक्तों के बारे में नहीं सुना। But they are very happy to receive some books. परंतु बहुत खुश हैं कुछ ना कुछ पुस्तकें प्राप्त करके। Russian people, they are very simple. जो रशियन लोग हैं बहुत सरल हैं। So it's not so difficult to preach there. तो इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पर उनको प्रचार करना। Sometimes I'm going to preach to Muslim part of Russia. तो कभी-कभार हम मुस्लिम इलाकों में जाते हैं जो रशिया में हैं। It's more difficult. तो वहाँ पे वो अधिक कठिन होता है। But they like India very much. परंतु वहाँ पे वो भारत को बहुत पसंद करते हैं। And I'm just telling that I came with books from India. तो मैं कहता हूँ कि मैं भारत से कुछ पुस्तकें लेकर आया हूँ। Did you watch Mahabharata movie? क्या आपने महाभारत मूवी देखी है? Usually they are saying yes. तो अधिकतर लोग कहते हैं हाँ। And I'm asking, did you like Mahabharata? तो क्या आपको पसंद आई महाभारत? They say yes. तो कहा हाँ। And I'm asking them, can you make a donation? It's called sadaqah in Arabic language. तो महाराज पूछते हैं कि क्या आप एक डोनेशन दे सकते हैं? इसको सदाका कहते हैं अरबिक भाषा में। And they say, of course, I can give sadaqah. कहते हैं हाँ निश्चित रूप से मैं सदाका करूँगा। So I am giving in exchange to them the books. तो उसके बदले में उनको कुछ पुस्तकें देता हूँ उपहार में। And they are also very happy to receive books. वो भी बहुत खुश होते हैं ऐसा उपहार प्राप्त। So it's not so difficult to preach in Russia. तो इतना मुश्किल नहीं है प्रचार करना। And many of them, they are becoming devotees. और उनमें से बहुत सारे लोग भक्त भी बन रहे हैं। Because they like to read books. क्योंकि उन्हें पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। They are becoming inspired. तो पुस्तकों पढ़ के वो प्रेरित हो रहे हैं। After some time, they find in where devotees are coming together to read books. तो पुस्तकें पढ़ने के बाद वो भक्तों को ढूंढते हैं। And they also are coming to hear the classes. तो वो कक्षा में भी आते हैं। And they are becoming devotees. और वो भक्त बन रहे हैं। And we have also one big preacher, Audarya Dham Prabhu. तो वहाँ पे एक बड़े प्रचारक हैं औदार्य धाम प्रभु। He is traveling all around Russia and he is giving classes about Ayurveda. तो वो पूरे रशिया में यात्रा करते ट्रैवल करते हैं आयुर्वेद के बारे में कक्षा देते हैं। And at the beginning, these people, they are becoming interested in Ayurveda. तो शुरू में ऐसे लोग आयुर्वेद में बहुत रुचि रखते हैं। And then they find out that he is devotee. और फिर बाद में पता लगता है ये भक्त भी हैं।
And they are becoming devotees also. भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। Because he is very popular person and he is devotee, so I also have to be devotee. तो क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। And now he is making the most devotees. तो वो इस समय सबसे ज़्यादा भक्तों को बना रहे हैं। Every year he is making like 1,000 devotees. हर साल लगभग वो 1,000 नए लोगों को जोड़ते हैं। Hare Krishna. एक मेरा क्वेश्चन है, अगर सपोज हम किसी को गिफ्ट में देते हैं, भागवतम देते हैं, और वो उसको पढ़ता नहीं, उसका तो मतलब निरादर नहीं होगा ना, पाप नहीं चढ़ेगा? Here's a question that if we gift Srimad Bhagavatam to someone, but if he does not read it or does not fully appreciate or respect it, so are we not disrespecting Srimad Bhagavatam? We have उसका जो reaction है, won't we get the reaction of sinful reaction of? when we are given Srimad Bhagavatam as a gift, we have to explain the person at least he should respectfully take care of Srimad Bhagavatam. We explain that. Yes, we have to explain. तो जब हम किसी को श्रीमद् भागवतम दें, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि इसका बहुत सम्मान करें। We should explain that he should make something like altar and put Srimad Bhagavatam on the respectful place. और उनको बताएं कि कुछ ऐसा स्थान बनाएं कि श्रीमद् भागवतम को बहुत सम्मानजनक अपने घर में रखें। If at least if they are not reading, at least they would pay some respect. तो अगर चाहे वो पढ़ नहीं रहे, परंतु उनको अच्छे से रखने से कुछ तो सम्मान वो दे रहे हैं। And they would get a great benefit just by respecting Srimad Bhagavatam. और श्रीमद् भागवतम का सम्मान करने मात्र से उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। So we have to explain. तो हमें इस चीज को समझाना चाहिए। हरे कृष्ण। आपने आज जो है भागवतम की ग्लोरिफिकेशन के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ में बताया कि जिसके पास भागवतम नहीं है तो वो बहुत डेंजरस स्थिति है, बट जिसके पास भागवतम नहीं है लेकिन भगवद गीता है तो उसके बारे में क्या बताया? He explained about the dangerous situation of one who is not having Bhagavatam. But what about those who don't have Bhagavatam but have Bhagavad-gita at home? It's very good if one have Bhagavad-gita at home. It's very good. तो बहुत अच्छी बात है किसी का Bhagavad-gita है घर पर तो। But the most important thing to read Bhagavad-gita. तो इसको पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। If we are only taking dust from Bhagavad-gita, it's also good. Bhagavad-gita में से अगर सिर्फ हम धूल ही हटा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। But if we will read Bhagavad-gita, we will get real benefits. परंतु आपको असली लाभ प्राप्त होगा उस भगवद-गीता को पढ़कर। Once Shrutakirti Prabhu was in the room of Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada was reading Bhagavad-gita. एक बार इसके श्रुतकीर्ति प्रभु श्रीला प्रभुपाद के कक्ष में थे और श्रीला प्रभुपाद भगवद-गीता पढ़ रहे थे। And Shrutakirti Prabhu, he asked Srila Prabhupada, why you are reading your own book? तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से पूछा, आप अपनी पुस्तकें खुद क्यों पढ़ रहे हैं? Because usually author is not reading his books. क्योंकि साधारणतः जो लेखक होता है वो अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ता। He is only writing books. तो सिर्फ लिख के छोड़ देता है। But Srila Prabhupada said it's not my book, it was dictated by Krishna himself. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि मेरी पुस्तक नहीं है, भगवान कृष्ण ने स्वयं इसको डिक्टेट किया है। So I am getting great benefit by reading this book. मुझे महान लाभ प्राप्त हो रहा है इस पुस्तक को पढ़कर। And Srila Prabhupada said, if one will read only this one book through his whole life, he will come back to Godhead. About Bhagavad-gita. Just reading this one book, Bhagavad-gita. Yes. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई इस ग्रंथ को पूरे जीवन पढ़ता है तो भगवत धाम आ जाएगा। So much potency is there in this
Bhaktivedanta purports. कितनी शक्ति है भक्ति वेदांत तात्पर्यों में. Because Bhagavad-gita was translated into Russian language 200 years ago. श्रीमद् भगवद गीता को रशियन भाषा में अनुवाद किया था 200 वर्ष पूर्व. But there was no purport. परंतु कोई उसका तात्पर्य नहीं था. And for 200 years the people were reading Bhagavad-gita in Russian, but no one became a devotee. तो 200 सालों से रशिया में लोग भगवद गीता पढ़ रहे थे, परंतु एक भी भक्त नहीं बना. But now, after 25 years, when first edition of Bhagavad-gita was produced in Russian, we have 100,000 devotees. 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष पूर्व पहला संस्करण निकला था रशिया में भगवद गीता का, श्रीला प्रभुपाद की. तो 1 लाख भक्त हैं इस समय. So much potency is there. तो कितनी शक्ति है इन तात्पर्यों में, आप अंदाजा लगा सकते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna. मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 14 वर्ष से भगवद गीता का अध्ययन करता रहा हूँ. लेकिन जब मैं यहाँ 6 वर्ष पहले आजीवन सदस्य के रूप में जुड़ा और जब मैंने प्रभुपाद की पुस्तक मेरे हाथ में आई यथारूप भगवद गीता, तब उसका वास्तव में उसका मुझे समझ आया. इससे पहले नहीं समझ आया था मुझे. और उसके बाद भी आज तक भी जितनी उसमें गहराई है गीता में, मैं वास्तव में अभी तक भी पूरा उसमें नहीं डूब पाया हूँ. अभी भी कई बार ऐसे हम लोगों का कहा है इंद्रजीत बने, किस तरह बन सकते हैं, भगवान ने उसमें सब कुछ बताया है, लेकिन पूरा यथार्थ रूप में नहीं उतार पाया. इसके साथ ही इसके साथ बस मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ. सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूँ प्रभु जी. प्रभु जी, मैं एक से बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ का आजीवन सदस्य बना तो मुझे एक ये भगवान जी का फोटो वगैरह दिया गया और ये श्रीमद् भागवतम का एक पूरी पेटी जिसमें 18 वॉल्यूम थे. तो एक्चुअली मैं ये अपनी हकीकत बता रहा हूँ और शायद ही भगवान की मुझे शक्ति मिली है कि वो आज तक मैंने उसको खोला नहीं है. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भागवतम का पाठ मुझे सुनना पसंद है. मुझे लगता है इतने 18 वॉल्यूम कौन पढ़ेगा उसको. वो है अच्छा, जो भागवतम होती है उसकी जानकारी हमें काफी टेलीविजन कथाओं से होती है, यहाँ हम सुन लेते हैं. तो मुझे खुद ये फील होता है कि मैंने इसको ला के रखा हुआ है, तो क्या मैं वो किसी को दान दे दूं या उसका अध्ययन शुरू करूं, क्या मैं करूं. मेरे लिए उसकी बहुत दिमाग में रहता है कि क्या मैं 18 वॉल्यूम पढ़ पाऊंगा. तो ये सर गुरु की मेरा शंका समाधान करें. So, He became a life member and received Srimad Bhagavatam at his place. And he said these are huge volumes, 18 volumes. Usually he likes to hear Bhagavatam and from different channels he hears Bhagavatam. So he always have a conflict in his mind whether he should actually open that carton of Bhagavatam and read it or should he give in charity to someone else. He's always have that conflict in the mind. because he does not read? Yeah, because it seems huge, 18 volumes, who will read all this? Maybe he will read. So he's asking what to do. Should he give in charity or should he actually open and attempt to read? Or what? Yes. The best is to read. तो सबसे अच्छा है कि आप उसको स्वयं पढ़ें. He can take some vow, like he can read 10 pages every day. तो इस प्रकार का कोई प्रण ले लीजिए कि मैं प्रतिदिन 10 पेज भागवतम को पढ़ूंगा. One devotee, he is reading all 12 cantos every year. एक भक्त है जो पूरे के पूरे 12 स्कंद प्रति वर्ष पढ़ता है. He took this vow to read whole Srimad Bhagavatam every year. तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं प्रति वर्ष
पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा. And he counted how many pages one should read to read Srimad Bhagavatam in 1 year. तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर मुझे एक वर्ष में श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है पूरा, तो मेरे को प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? One has to read 50 pages every day. तो 50 पेज रोज पढ़ने से आप एक साल में पूरी भागवतम खत्म कर सकते हैं. So in 1 year you will read whole 12 cantos. तो वो हर वर्ष वो सारे के सारे 12 स्कंद पढ़ते हैं. If you will read 10 pages, it will take 5 years. तो अगर आप 10 पेज पढ़ते हैं तो आपकी 5 साल में खत्म हो जाएगी. So you can try to take some vow and you will read the whole Bhagavatam. तो आप ऐसा कुछ व्रत धारण कर सकते हैं अपने जीवन में और आप पूरा भागवतम. It's very auspicious to read whole Srimad Bhagavatam. बहुत आभार. And you can buy one more set and give as a gift. Give as a gift to your friends or relatives. और महाराज कह रहे हैं आप एक और भागवतम खरीद कर दान में दे सकते हैं. We can stop at this point. Grandaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, all glorious to the assembled devotees.